Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. थैंक यू बेटा, वेरी वेरी नाइस। एंड जैसे मैं बोलता हूँ, तुम्हारा क्लास मेरे को बहुत कूल लगता है, एकदम एकदम सच ए कूल प्रेजेंटेशन एंड सो वंडरफुली ऑल द पॉइंट्स यू हैव प्रेजेंटेड आर आल्सो so beautiful. Yes, time is so important, but it is taking away everything. और वो जो आइसक्रीम वाला एग्जांपल it was really wonderful कि लोग really they want to keep their body, their youth, even if they are old they want to stay alive. जैसे हम लोग जानते हैं, even many celebrities, वो लोग they wanted to live longer, but it is not possible क्योंकि मृत्यु लोक का लक्षण ही है, symptoms are that you are going to take birth, you are going to stay for some time, you are growing, you are reproducing, and then one day you have to die. No one can stop that. So just keeping the ice cream in the fridge is not going to protect the ice cream. एक्सटर्नली हो सकता है कि ऐसा लगे कि मतलब फ्रिज में तो है, लेकिन इंटरनली उसका जो डैमेज है वो होते रहता है। वैसे ही हम लोग देखते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या बोटॉक्स और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं to look younger, but internally their aging, their deterioration is happening. कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये होता रहेगा, and by no means we can stop that, and that's the effect of at the power of time. We cannot overcome that, but only thing is हम लोग जब हरि नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे हम लोग, एंड वेरी ब्यूटीफुली यू प्रेजेंटेड कि जैसे प्रभुपाद जी ने हम लोग को ये दिया है, सो वी कैन टेक अप टू दिस पाथ। सो थैंक यू बेटा। मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है? यस वही जी माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. I just wanted to share this. In fact, Madan Sundar Prabhuji, कल क्लास में he was just saying, जैसे वो टालकम पाउडर डाल के हम उतना ही कर सकते हैं, right? But and also the thing is, I think material world में they say that 40s is the new 20s and 50s is the new 30s. But realization nahi aa raha hai, right? Whatever, externally you may still do something, internally both in terms of organs or deteriorate ho raha hai, and we're also losing this precious life that has been given to us. And I also wanted to share apne, I think that illusion, why we have to give a tiger ka example. I thought I'll share that. When a man is dreaming, about a tiger, usko वो tiger real lag raha hai, पर उसके साइड में जो person is sitting next to him, उसको वो tiger नहीं दिखता है, because he is not in illusion, right? So we're all in illusion उससे, because वो tiger तो really नहीं है. So then we are fearful because of that. The illusion say, first of all, tiger itself is an illusion, and then we are fearful because of that. That's because we are living in this illusion. So but the person who's not in illusion clearly sees, because he's not in the dream of this person, so usko nahi dikhta hai wo tiger, so he's never in illusion. So wanted to share that. And a question bhi tha, Mataji. Aapne kaha ki that this to get this message of Bhagavatam, and सबको ये बांटना है. पर remember भगवद गीता का एक purport में, unfortunately I don't have the book with me right now, पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लोग who are like too much in illusion, उसको we should not try and change them. So
thoughts on that, Mataji? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for your really nice points and for the question. If I understand correctly, आप बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें जो लोग बहुत ही अगेंस्ट हैं to know about God, we should avoid them. Is that your question? Yes, Mataji, we shouldn't Yeah. try and convert them because, you Yeah. know, it may even be harmful. Like, I don't, unfortunately, as I said, I don't have the book with me. Otherwise, you know, I would Yes, have been yes. able to pull out the purport. But if you can Yes. share on that, you know, your thoughts. Hare For Krishna. sure. Hare Krishna. Sure. So there is, yes, there is a verse in the Bhagavatam, which describes the Madhyama Adhikari. And usme, I will just bring it up. So it basically talks about how the Madhyama Adhikari, which is जो भक्त है, जो मध्यम भक्त है, मतलब एक तो कनिष्ठ होता है जो बेसिक नियोफाइट है, और जो मध्यम है जिसे आगे बढ़ना है, या जो लक्षण दिखाता है एडवांस डिवोटी के, तो ये उन्हें कैसे एक्ट करना चाहिए. सो दिस इज श्रीमद् भागवतम 11:2-46. तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि एन इंटरमीडिएट और सेकंड क्लास डिवोटी कॉल्ड मध्यम अधिकारी. तो अभी there's a few points over here. Yeah, he offers his love to the Supreme Personality of Godhead. Okay, is a sincere friend to all devotees of the Lord. Then 3, shows mercy to ignorant people who are innocent. And 4, disregards those who are envious of the Supreme Personality of Godhead. तो इसमें जो लास्ट 2 कैटेगरीज हैं वो डिस्टिंक्शन करना इम्पॉर्टेंट है कि और एंड द वर्ड दैट इज यूज्ड इज कुछ लोग ऐसे बाली शेषु मतलब जैसे बच्चों जैसे, मतलब दोज हु आर इग्नोरेंट. तो बहुत सारे लोग हैं बाहर जिन्हें ये ज्ञान नहीं, उन्हें पता नहीं है, पर दे आर इनोसेंट. तो उन्हें हम दे सकते हैं, उन्हें द मध्यम अधिकारी शुड गिव मर्सी टू देम एंड शुड टेल देम अबाउट दिस नॉलेज. पर जो द नेक्स्ट वन इज द्विसत्सु, जो एनवियस हैं, envious to Krishna and Krishna's devotees. That is how Prabhupada translates it. तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए. Actually, the word that is used is apeksha. Upeksha. Neglect them. तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए. तो ये जो प्रीचर्स हैं वो भी बताएंगे क्लियरली, जो रियलाइज्ड है. मेरे गुरु महाराज हिज ग्रेस वैष्णव शेखर प्रभु भी बताते हैं कि अगर आपको पता है कि कोई बिल्कुल ही ऑफेंसिव है या इग्नोरेंट, लाइक दे आर अगेंस्ट, यू नो, एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है वो, इफ यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स टू देम, और you can totally ignore those people. You're not obliged to force them, to convince them, because they will create more offenses. And actually उनके भले के लिए हमें उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें ज़्यादा प्रीच करें तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अपने ऑफेंसेस में, या अपने in their conviction, so they might get irritated and all that. So we want to avoid them. Thank you, Mataji. That's a nice question. Yes, Prabhu, please go ahead. Yeah, very nice Very question good. and जो very हम we are trying to improve. Krishna. Yes, Prabhu, please. yeah. Sorry, huh. So very nice question by Mataji and very nicely replied. But I just wanted to present another angle to it. Like we see Nityanand Prabhu, he is always sketching such persons who उनका कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है. जैसे हम लोग व्हेन वी प्रीचर्स, हम लोग जब प्रचार करते हैं तो हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत कौन मतलब फेवरेबल है उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं. बट नित्यानंद प्रभु उनको छोड़ देते हैं, बोले हु इज मोर सिंफुल, को किसका चांस नहीं है उसको जाके पकड़ते हैं. एंड आई रिमेम्बर वंस इवन हिज होलिनेस राधा गोविंद महाराज वो भी अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि वो एक मतलब ऐसे
आई थिंक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ही था कुछ, एंड महाराज वाज देयर एंड एक दरवाजे पे ठोका उन्हें, तो पहले तो खोला ही नहीं उसने, तो और फिर 3-4 बार के बाद खोला तो एकदम भड़क गया। वो बोला, तुम लोगों को इस्कॉन वालों को समझ में नहीं आता, ऐसा है तैसा, मतलब बहुत कुछ बोलने लगा। तो महाराज भी बोले चलो आज तो इसके पे कृपा करके ही जाएंगे, जिसको छोड़ेंगे नहीं। उसने धड़ाम से दरवाजा बंद किया, महाराज ने फिर and he did that and finally he convinced him. So my point I was trying to drive is ki it all depends also on what capacity or not capacity, I will say what purity we have. Yeah. Like sometimes, like His Holiness Radha Govind Maharaj or we say Nityanand Prabhu, they are all such powerful souls. Nityanand Prabhu is Lord himself, so for them it's not difficult. It's totally different. You can say different angle, but yeah, we has an लेकिन से ना वी हैव टू कीप द एटिकेट्स। जैसे हमको पता है कि अगर ये अपराध मतलब अपराध करेगा तो वी हैव टू कीप अवे फ्रॉम हिम। हम लोग कभी कभी कोशिश करते हैं, लेकिन समटाइम्स वी सी वो नहीं मानता है, देन वी से ओके भाई, हरे कृष्णा, यू आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। बट there are very powerful personalities like who search for this kind of persons and they keep hammering on them. Just take ये एक different angle था, just want to present. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Yes, Veggie Mataji. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. That's a very, different and interesting thing. When I thought that's probably Uttam Adhikari, so they will not get affected. But agar, we are in the Kanishta stage or Madhyama stage, हमारा भक्ति को भी हमें protect करना चाहिए ना, ऐसे लोगों से interact, हमारा भक्ति भी, maybe there'll be a fall down otherwise. Thank you very much for sharing about, Nityanand Prabhu and Radha Govind Prabhu. Hare Krishna. Pranam. Thank you, Mata, and thank you, beta. Yes, Mataji. Prabhuji, it's just not turning off, no more questions on my side. Thank you. Hare Krishna. Okay. Thank you, Mata, for wonderful questions. Thank you, beta, for such a wonderful presentation. तुम्हारा presentation, I really love it. मुझे बहुत अच्छा लगता है. So please keep coming again and again. Naam Chintamani is also a Bhakti Shastri, and I think Bhakti Vaibhav also. No, I'm going to start Bhakti Vaibhav soon. I'm very excited. And she has stayed in Vrindavan, and वहाँ पे I think it was full 1 year or 2 years course something. मतलब हमारी तरह नहीं, वो सब छोड़ के जॉब छोड़ के she stayed in Vrindavan from ऑस्ट्रेलिया से छोड़ के आई थी, and she had done in Vrindavan. So and that's why her study is so good, her realizations, her presentations are so good. And thank you, beta, for coming, and please keep joining again and again. We'll love to hear from you. But yeah, no, I just want to give all the credit to the devotees, all the devotees I have had association of, and Prabhupada and my Guru Maharaj. I just got very fortunate, so I got those opportunities. But thank you for encouraging me and for giving me this opportunity. Hare Krishna. Yeah. Thanks, beta. Okay, chalo. We'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय. Thank you, beta. Hare Krishna.